Just a minute. I'll have a very quick recap over what the average is. What we know is average is just equal distribution of number. If 4, 5, 6 are three numbers, the average of these three numbers is 5 because all of can have 5 each without changing the total. The total here is 15 and total here is 15 again. So now let's say there are two groups, group A and group B. Let's say this is the class or section of or two sections of class 10th A, 10th B. So if the section A students has got on average 20 marks in a paper, and you are supposed to write your name while admitting the Zoom because the request is coming that Redmi is willing to join the group. So and section B has got 40 marks in the same exam. So what you know is like all the people of section A might have one students, two students, three students. है It can have any number of students. Similar for B, it can also have any number of students, 1, 2, 3, 30, 40, any. But the point is all the students have average. The average of all these students is 40 and average of all the students from A is 20. So what I'll try to do is here is I'll try to find the group average. If I want to calculate the average of entire class 10th. So how should I do it? So let's say the group A, the section A has 1 students and section B has 2 students. So what I did here, I took students in 1:2 ratio. Is everybody is getting me? See, the classroom course is like offline course is like online course is like I'm not seeing any of you, so I cannot say by face that which of you is not getting me. So you need to write on the message. आप लोग को लिखना होगा कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? मैसेज लिख कोई. Is everyone is getting the screen? Okay, thank you. So the good thing is like 10 of you have joined the class. We can expect better attendance from next time. Who has joined from Redmi phone? The two of the you I don't know who are the students. Rest all have the name in their profile. Okay. Anyway, let's go to the class. So in this case where A has 1 student and B has 2 students, so what will be the average? Now it's very easy to calculate. What you can do is like you can add all these three numbers and divide by 3. It will be 100 by 3. 100 by 3. That is 33 1 by 3. So average will lie between these two numbers, 33 1 by 3. What if
if I have taken equal number of students, like section A has one student and section B also has one student. So in this case, the average of a student, the ratio of students that I have took from both of the class is 1:1, and now the average of these two group together is 60 by 2, 30. Two students has raised hand. Okay, let's go to the chat box. You can ask your doubt in chat box. Okay, Domson. Any trouble in understanding what I'm teaching? You can put your doubt on the chat for everyone. Put your doubts for everyone, not privately to me. Just a minute. Okay. Who has marked this blue line? As the screen is also shared to write for everyone. I think it's a meeting screen, so anybody have can write on the screen. But please don't. Nah. Of course, Nivedita. Uh, uh, it's not about unit that I have taken. It's just like the number of students will always be in some ratio. Like here, I have taken in 1:2 ratio at this point, and this average will be true for all the numbers. Like if A will have two students and B will have four students any of the time, or if A will have 10 students and B will have 20 students. In all these cases, the average will always come 33 1 by 3. So the group average is basically comes through packets. Like if A and B, group A and B has 1:2 number of students in 1:2 ratio, these three students will have average of 33 1 by 3. And all these packets, like if we'll take one as group A has 20 students and group B has 40 students, so it can be taken as 20 groups of 1:2. So all the small grouplet will have 33 1 by 3 and the entire group will have 33 1 by 3 as an average. I hope I have cleared your doubt. So next I have taken number of students as 1:1. So A has one student and B also has one student. So the average will always come as 30. So what you can easily see here, if there are equal number of students in groups, the average lies in just center of these two numbers 20 and 40. The group average lies at 30. And if you have increased the number of group B students like 40 here, 2 times 40, the average has shifted towards 40. So similarly, you can just guess that if I increase, okay, Swastika, uh, uh, you can put your doubt in chat. I'm opening.
Swastika, write your doubt in chat for everyone so that everybody can understand what you have asked. A and B, do we take the average into consideration and not the units? Um, I don't know what unit you are talking about. There is no unit here. There is just two quantity. The A and B has a number of students, different number of students, and their averages. So average I have made fixed that group A has 20 average of 20 and group B has average of 40. 20 and 40 are not the number of students, it's the average marks that they have got. Now what I am doing is I'm taking different numbers of students in A and B. लेट मी एक्सप्लेन यू हिंदी. जैसे अगर ए में अगर अगर आप कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे लेट्स से द ग्रुप ए हैज 40 students and group B has 80 students. So what I am considering that it is 1:2 ratio. So my point is like if we take any number of combination which is 1:2 ratio, or the number of students for A and B, the average will always come 33 1/3. You can just check it through different values of 1:1 number. Like let's say group A has 30 students and group B has 30 students again. So the average will be 30 into 20, the total number of marks which group A has got, and 30 into 20, 40, the total number of marks which group B has got, and you will divide it by 60. Ultimately, what will happen is the 30 will get cancelled and it will have 2 here. So it will again be 30 as an average. So my point is ki if number of students are equal in group A and B, hmm, like if group A has 8 students, group B has 8 students also, the average will always be 30. And um, the next concept that I was deriving here is if you increase the number of students in any of the group in ratio terms, like here I made the group 1:2 ratio where group B has greater number of students with respect to A. So in this case, average has been shifted towards 40, which is 33 1/3. Otherwise, it would have been at the center, 30. Are you getting my point? I'll explain you again the entire thing. Uh, so what we were talking about, that we have two groups, two sections, A and B. The section A has 20 as average. Section B has 40 as average. So I was taking different number of combinations of their students. As A is to B, Domson, you can use earphone because I think everybody is getting my voice clearly. It's just you that have asked. Is everyone is getting voice clearly? You can just WhatsApp me also, WhatsApp in the group also, that if there is any problem. Okay. Ujasa, you can see me? Okay, great. Okay. So let's come to the lecture. So what I was saying, that if A and B will have any number of students which is in 1:2, 1:1, like if A has 1 students, the number will be for 20. The B has 1 student, number will be 20. If we'll add this and divide it by 2, you will get 30 as an average.
So the point is, if there are equal number of students in both of these two group, you'll always get 30 an average. Just hold for a while. Okay, I'm back. So, so here we were that the group average will be 30. The entire group including A and B, the entire group average will be 30. So the next point I put is, if we have greater number of students, like make it 1 is to 3, like A has 1 students and the group B has 3 students. So what I can say here, that group the A has 1 student which will have 20 marks, and group B has 3 students which can have 40 40 40 each, or whatever the number, but they are equally distributed as 40. So the average that we will get here is 140 by 4. The sum of entire group's number and number of people divided by number of people, you will get here is 35. So what do you see? The average that I got is 35. So the point is, if we increase the number of students from 40 sides, the average will shift from 30 to 35. So it's a very important pattern that you can see here is, the group average of A is 20, the group average of B is 40, and the average that you got is 35. So if we'll check the difference here, it is 15 and it is 5. So you can just see that the differences here that we got is 3 is to 1. Like this difference denotes the number of students of group 40, and this distance denotes the number of students of group A. So what I can say is 5 is to 15, which is 1 is to 3. So you can just now clearly see that the deviation of average which moves any of these sides will always be in the ratio of their number of students. So let's say uh, Ritik. So whosoever is joining late, it's almost 30 minutes lecture only. So I was just checking the credibility of this app. If everything is good, I'll buy the subscription so that we can keep large duration of class. Currently, it has given us limited scope to put classes. So now let's come to the point. The again in the same way, if I'll have 3:1 ratio of number of students, like section A will have 3 students and section B will have 1 students. The average that we get is 60 plus 40 by 4, which is 100 by 4, 25. So what did you see? That average has shifted from center to group A number. So again, you can just see the difference which has created by the average. It is 50 far from 40 and 5 ahead from 20. So what I've told you, that this difference will give
reference of this group, and this distance will give reference of this group. So the number of students is 15:5 का ratio में है, which is 3:1. So now you can just visualize the same fact. You can just visualize the same fact through other mode also, like A and B. A and B has 3 students. A has 3 students and B has 2 students. So the average that we should get is what I have told you, that the difference will get divided in the same ratio, which is the number of students here will have this gap and number of students here will have this gap. This is quite difficult to understand. You should not keep it like you will get the entire thing right now. You might need to have different class, one another class for the same, and we'll keep that this class of in offline mode also. So the entire distances of 20 will be divided into two parts, 2:3. So the average will be here is 28. I just divided the differences into 2:3 ratios. So you can just verify it at your place also. So what did you see is, so they have extended our time. I hope you all are still here. In between, you can kept on typing something in the message group so that I can understand that everyone is getting. Mhm. Of course, Nivedita, I will describe it again. Let me erase the entire board again, because we can keep on. Whosoever have who have written these lines here, the blue and black line, please delete it from your side. I, so let's go back again to the same problem. We have two groups. Just hold for a second.
Sorry, welcome back. Ritik, so let's go back to the problem again. I'll this time I'll have a quick reference. There are two groups, A and B, and let's say the group A has average marks of 20 and group B has average marks of 40. So what I said that number of students of group A and B that can have any ratio, and let's say it is 2 is to 5. So this will be true for if A has 20 students, B has 50 students, or A has 8 students, B has 20 students, or A has 40 students, B has 100 students. Any number of combination which have the same ratio 2 is to 5, the average will be same. So what you could get it from the group average shall depend upon ratios of group. So so the first thing that I did explain was if there will be equal number of students in group A and B, the average will always become 30. And if in this case the group B has higher number of students than group A, which is 2 is to 5, the average will shift towards 40. And the shifting will occur in the same ratio which has there in the group number of ratios in the group. Let's calculate here. The total marks which group A has got is 20 into 2. The total marks which group B has got is 40 into 5, and the total number of students here are 7. So the average that you will get is 240 by 7, which is 334 2 by 7. I have taken some ratio which is not giving me a integer average, but you can just say that average has shifted towards B, which is 34 2 by 7. Matlab it is greater than 30. Why it is greater than 30? Because number of students in B is greater. So if I'll take another example of number of students, like let's take the number of students into A in group A and B is 3 is to 2 ratios. So I can just predict by this particular ratio that the average will come less than 30. That I already told you, if they will have equal number of students, the average will be 30. If there are more number of students in B, the average will be greater than 30. If number of students are greater than, in number in A, the average will be less than 30. Is everyone getting? Swastika, एक बार सारे लोग मैसेज करो. यस. कम व्हाट्सएप पे किया गया तुम लोगों ने. वेरी गुड, वेरी गुड. So the thing is like if you are getting even slight, even 10%, 20% of what I'm talking, it is good, because from next time we'll plan the class in a good way.
and we'll have 2 hour class. So thankfully that we are having good response from everyone. Sahitya, Domson, Ujasa, Kumbhika, Ankit, everyone is giving us a nice response here. Thank you. So we'll keep these classes, and the best part is these classes will be recorded parallelly. So if there will be a good class, I'll put it on YouTube also for you all, so you can repeat the entire lecture as per your convenient time and speed. So so let's go to the problem. We had two groups, A and B. Both group has an average value. The group A has a 20 average, the group B has 40 average, and we were willing to find out the group average. And then the the idea that we had developed is, if there will be equal number of students in group A and B, the average will always be 30. And if number of students in B is greater than A, the average will be greater than 30. If A will have higher number of students, the average will be less than 30. ठीक है. Somebody has also demanded कि हिंदी में भी बोल दो बीच बीच में, तो we'll keep that in mind. तो चलो यहाँ पे ग्रुप ए के पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बी के पास 2 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. एंड व्हाट वी नो कि एवरेज जो होगा वो हमेशा 30 से इस केस में 30 से कम आएगा. कैसे कम आएगा? ए के पास 20 के 3 स्टूडेंट्स हैं एंड बी के पास 40 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स हैं. Total marks that we have got from both group is 60 plus 80, which is 140. And number of students, total number of students, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, which is 140 by 5. तो ये आपका है 28. So what did you see? The average is less than 30, which is 28. So the second thing that I have established, or we tried to establish, is I'll write it here. The average that we got was, in this case, 28. So the 28 will always lie between 20 and 40, of course. So the difference between 20 and 28 is 8, and 28 and 40 is 12. So what I said to you was, the 12 number will denote the number of students in A, and this gap will denote the number of students in B. So the number of students will always be in this ratio, 12 is to 8, which is 3 is to 2. Did you get my point? Now this is called alligation. This practice where we can just find average ratio of students through the final average, which is the inverse of what I am talking in all lecture. तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेट मी क्लियर द बोर्ड. A, B, A has 20. If there is another problem, just listen to the problem carefully. अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि A और B ग्रुप में का A का एवरेज 20 है
और बी का एवरेज 40 है, एंड द मिक्सचर मतलब द ग्रुप एवरेज इज 32, द ग्रुप एवरेज इज 32. एंड इफ आई से कि इफ आई आस्क यू कि ए और बी के रेशियोज बताओ, नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड वर्सेस ग्रुप बी, तो यहाँ से पहले तो हमें ये पता चलता है कि ये 30 से ज्यादा है. दैट मीन्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी विल बी हायर देन ए. दूसरी चीज हमने क्या बताई कि ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है इन दोनों नंबर्स के साथ, 20 से 32 में 12 का और 32 से 40 में 8 का. So their students will always be in the ratio of these gaps. 8 is to 12, which is 2 is to 3. So this will be my answer. तो इसको दूसरे तरीके से भी हम पूछ सकते थे कि अगर ए में 60 स्टूडेंट्स हैं तो बी में कितने होंगे. तो आपको पहले रेशियो मिल जाएगा, एंड थ्रू दिस रेशियो आप यू कैन इजीली टेल कि बी में 90 स्टूडेंट्स होते हैं. इसको दूसरे तरीके से ये भी पूछा जा सकता था कि ए और बी के इंटायर मतलब टोटल ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो 200 हैं, तो ए में कितने होंगे और बी में कितने होंगे. तो आप ऐसे ही बता सकते थे. 2:3 में हम बांट देंगे 200 को, विच इज 80 एंड 120. So is everyone getting what I have already explained? मैसेज करो. ठीक है. ओके सृष्टि, करते हैं हम रिपीट. एंड I'll ask क्वेश्चन आल्सो, और रिपीट भी कर देते हैं. चलो. जस्ट ये लाइंस किसने ड्रॉ किए हैं वो इसको डिलीट कर दो, ये ब्लू वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन, बिकॉज इट्स नॉट माइन. तो क्वेश्चन ये है, I'll just write the figures, not the entire question. कि ग्रुप ए के पास 20 स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप बी के पास, सॉरी, एवरेज ऑफ मार्क्स विच ग्रुप ए हैज is 20 और ग्रुप बी हैज 40. So the question number A, आपको ग्रुप एवरेज फाइंड आउट करना है when A के पास 10 स्टूडेंट्स हैं और B के पास 30 स्टूडेंट्स हैं. अगेन ग्रुप एवरेज ही फाइंड आउट करना है इफ A के पास 20 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 30 स्टूडेंट्स हैं और B के पास 90. C, ग्रुप एवरेज ही फाइंड आउट करना है जब A के पास 30 स्टूडेंट्स हैं और B के पास 12. D, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जब ग्रुप एवरेज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जब ग्रुप एवरेज 24 है और 25 है और
35 है और 30 है और 32 है. E, if group average is 28 और total number of students is 300, तो A और B में कितने कितने होंगे? A और B में कितने कितने स्टूडेंट्स होंगे? You can just write answers with corresponding question values. Reply to everyone so that everyone can see. Ujasa, so in both of these two cases, the ratio of students is 1:3. So good, everyone. ABC is okay. So group A has 1 students, group B has 3 students. You can just calculate the average even by adding all these. 140 by 4, which is 35. Or you could have got the same answer by dividing the gap in 3:1, which is reverse of this. By the same way, should I explain the what is the question or answer of any of these? Ujasa? The question is like the ratio of students. You need to find out ratio of students when group average is given there. Group average is 24. Then what will be the ratio of students? So let's go back to number C. This is 5:2. So the average will become 20 into 5 plus 2 into 40 divided by 7, which everybody has got in. So did you get the question, Ujasa?
So the strategy of these questions will be, and we got the group average as 24. So what I said you is like the distance 24 और 20 का जो डिस्टेंस है वो 4 का है, और 24 और 40 का जो है वो 16 का है। तो इनका रेशियो जो होगा वो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, 16:4, which is 4:1. And I'll explain the same thing in other way also. Let me explain you. This is little tough to understand. So if anyone is not getting the entire concept, they can ask the same thing in the class also, because it's very important and it's quite tough also. In terms of formula or short trick, you can remember it, but that will be not of any help. So the point here is the group average is 24. So what I'm saying that every students of A has 20 marks, every students of B has 40 marks, and you want to have group average 24. So every time if one student of A is there, it is 4 less than group average. And if there is one student in group B, it is 16 more than group average. So you know in the average, जिसके पास ज़्यादा होता है वो कम वाले को देता है to reach to the average. तो B का हर स्टूडेंट्स 16 एक्स्ट्रा रखता है एवरेज से, यानी कि ये 16 देता होगा A के स्टूडेंट्स को। तो हम वी ट्राई टू मैनेज कि कितने स्टूडेंट्स A के और कितने स्टूडेंट्स B के ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे कि टोटल एक्स्ट्रा और टोटल मिसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि A के पास 4 कम है और B के पास 16 ज्यादा है, तो एक स्टूडेंट B का कैन सफाइस द नीड ऑफ 4 A स्टूडेंट्स। जैसे अगर 4 बार हम A के स्टूडेंट्स को ले लें तो सब -4 everyone is less than 4 less than and group average। और ये जो 16 का जो मिसिंग है, दिस वी कैन गेट बाय दिस 16। समझ में आ रहा है? तो ये जो है, इसलिए ये 4:1 का रेशियो है। ये आपको एक दूसरा तरीका हो गया देखने का। तो सिमिलरली व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक दूसरा वाला वैल्यू लेके बताता हूँ तुम्हें। लेट्स टेक ग्रुप एवरेज एज 25 वाला चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा कि ए का एक स्टूडेंट अगर है तो उसके पास 20 है और ग्रुप एवरेज इज 25। बी का अगर एक स्टूडेंट है तो उसके पास 40 है और ग्रुप एवरेज इज 25। तो ए को हमें 5 देना है एवरेज तक पहुंचाने के लिए, और बी हमें 15 देगा। ए को हमें 5 देना है, मतलब ए जो है 5 कम है और बी 15 ज्यादा है। बी 15 ज्यादा है, तो हम फिर से इसको कोशिश करेंगे एडजस्ट करने का
कि कितने कितने स्टूडेंट्स लें हम ए और बी के, कि जिससे कि जो कम या ज्यादा है वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कितने कितने स्टूडेंट्स लें कि ये एडजस्ट हो जाए। तो हम देखते हैं कि अगर हम ए के 3 भी स्टूडेंट्स ले लें तो तीनों जो है 5-5 करके मिस कर रहे हैं ग्रुप एवरेज से, और ए बी का एक स्टूडेंट इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, ये मतलब कवर अप करता है। तो इनका रेशियो जो होगा वो 3:1 होगा। इस तरीके से भी जरूर सोचो। इट इज लाइक, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग है इसके रिस्पेक्ट में, एवरेज के एलिगेशन के रिस्पेक्ट में, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी तुम्हारी। तो अब मैं थोड़ा सा एक बी वाले साइड का लेता हूं मैं, जिसमें बी ज्यादा होगा, मतलब number of students in B will be greater. Let's take the example of 32, the last one. हमने बोला कि अगर A का एक स्टूडेंट लेंगे, A का एक स्टूडेंट लेंगे और B का एक स्टूडेंट लेंगे, ग्रुप एवरेज 32 है, ग्रुप एवरेज 32 है, तो A जो है वो मिस करता है 12, और B जो है जो एक्स्ट्रा आपको देता है वो है 8 का। तो ये 8 इसको मेकअप नहीं कर सकता इस 12 को, तो हमने बोला कि चलो बी का एक और ले लेते हैं। तो बी के पास अब आ गया 16, लेकिन ए जो मिस कर रहा है सिर्फ 12 मिस कर रहा है, तो हम ए का एक और ले लेते हैं। तो अब एक और ये टोटल मिस जो होने लगा इन ग्रुप ए, टोटल जो हम मिस कर रहे हैं वो 24 मिसिंग है। टोटल जो है हम 24 मिस कर रहे हैं, और बी जो हमें दे रहा है अभी एक्स्ट्रा वो है 16, तो अभी भी सेट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया कि बी का एक और स्टूडेंट ले लिया। तो अब मुझे एक बार और 8 मिला। नाउ व्हाट आई से इज कि टोटल मिसिंग जो है वो 24 का है, टोटल एक्स्ट्रा भी 24 का है, मतलब 2 स्टूडेंट ए के और 3 स्टूडेंट बी के ऐसे मैनेज कर लेंगे कि ग्रुप का एवरेज 32 आए। ठीक है, तो एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट। यही चीज आपको हर जगह काम आएगी, ये थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करना सीखेंगे, और एलिगेशन पे भी बेस्ड और सिमिलर भी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। आंसर्स बहुत जल्दी भेज रहे हो तुम लोग, पहले मेरी बात तो समझ लो। ये लास्ट वाली पार्ट क्लियर है सबको? प्लीज मैसेज मी। इज एवरीवन इज गेटिंग कि कैसे हम एवरेज वैल्यू से रेशियोज निकाल रहे हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन हो जा सर। एक्चुअली 3 ग्रुप के लिए जो फर्स्ट पार्ट है कि ग्रुप एवरेज निकालने के लिए वो तो सेम कंसेप्ट होगा, लेकिन लेकिन जब 3 ग्रुप के लिए, 3 और मोर ग्रुप के लिए जब हम ग्रुप एवरेज से अलग अलग रेशियो निकालेंगे तो उसमें कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा या कम के लिए ना तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे टू एडजस्ट।
जैसे कि अभी जैसे तुम्हें एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं। जैसे I'm deleting the board। जैसे अगर हम बोले कि ए देर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी, और ए का एवरेज 20 है, बी का 40 है और सी का 50 है। एंड इफ देर इज अ रेशियो 1:2:3, सो इस रेशियो में जब भी स्टूडेंट्स होंगे उनका फाइनल एवरेज वही आएगा जो एक बार इस रेशियो का आएगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम अभी कैलकुलेट करना चाहें तो 20 प्लस बी में 2 स्टूडेंट्स हैं तो 80, सी में 3 स्टूडेंट्स हैं तो 150, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे वो 6 होंगे, विच इज 250/6। तो फाइनल एवरेज जब अगर हम ये 10, 20 और 30 स्टूडेंट्स भी लें तो यही एवरेज आएगा, कुछ और नहीं आएगा। यहां तक तो सही है। लेकिन लेकिन अगर आपसे यही बोला जाए कि 20, 40 और 50 का एवरेज है ए बी सी का, एंड आपका फाइनल जो आया है वो लेट्स से 42 एवरेज है, ग्रुप एवरेज। तो इसमें 42 की जो एडजस्टमेंट है, जैसे यहाँ पे तुम्हारा मिसिंग कितना है, 18 का है, यहाँ मिसिंग कितना है, 2 का है, और यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, 8 का है। तो इसके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एडजस्टमेंट के। जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम 3 बार ले लेते हैं इसको, और इसको एक बार और इसको 3 बार, तो वो 24 का ये भी मिस हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा 24 दे देगा। या इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में भी हम कर सकते थे। तो ग्रुप एवरेज से रेशियो निकालना, ये मतलब निकलेगा तो कई सारा निकलेगा, बट यू कैंट से दैट दिस वन इज राइट, बिकॉज वो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर किसी का नंबर फिक्स कर दे कि जैसे यहाँ पे 4 है, तब बोले तो चलो फिर भी ठीक है कि हमें समझ में आया कि यहाँ पे 4 बच्चे तो हैं ही, बट अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। तो 3 और मोर के लिए ये वाली प्रॉब्लम है। बट एक बार ये स्टैब्लिश हो जाता है कि रेशियो पे एवरेज अगर आपका जो बन रहा है, तो उस रेशियो में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसका एवरेज वही बनेगा। इज इट ओके मुजा सर? बताओ। इज इट क्लियर टू यू? भव्या, तुम्हें कुछ भी समझ में आया? मैसेज करो। द लास्ट वन जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे निवेदिता, 3 ग्रुप वाला। अच्छा अच्छा, रुको, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। द क्वेश्चन वाज कि सेम कंसेप्ट्स जो हमने 2 ग्रुप के लिए पढ़ा, वो 3 या मोर ग्रुप के लिए वैलिड होगा कि नहीं। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ए बी सी में जो ए बी सी आर 3 डिफरेंट ग्रुप, और ए का एवरेज 20 है, बी का 40 है और सी का 50 है। ठीक है। तो हमने बताया कि अगर आपके पास रेशियोज, एक मिनट, लेट्स टेक इट 60।
सो अगर मैंने बोला कि इफ ए बी सी हैज इक्वल नंबर ऑफ पीपल 1:1:1, so then average will become 20 plus 40 plus 60 by 3, which is 40. ऋतिक, तुम्हारे पास नेटवर्क का इशू है ना? बार बार तुम ग्रुप से बाहर चले जा रहे हो. सो दिस विल बी द एवरेज ऑफ एंटायर ग्रुप. तो मेरा पॉइंट ये था कि ये वाला कंसेप्ट तो फॉलो करेगा. मतलब फॉलो करेगा मतलब क्या है कि अगर ए बी सी में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं एबीसी में, तब भी उनका फाइनल एवरेज जो है 40 ही आएगा. सो द रेशियो टू ग्रुप एवरेज ये फॉलो करेगा. लेकिन रिवर्स में अगर हम बात करें कि लेट्स से कि इसका 40 है ग्रुप का एवरेज, 40 है तो ठीक है, 40 पे तो चलेगा ही. लेकिन अगर मान लो कोई और है, लेट्स से कि 45 है ग्रुप एवरेज, तो हमने क्या बताया कि इसमें हम मिसिंग देखते हैं. जैसे मान लो कि ये 20 वाले को 25 चाहिए होगा, ये 40 वाले को 5 चाहिए होगा, और 60 वाले को 15 चाहिए होगा. मतलब 15 ये देगा. तो इसके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके एडजस्टमेंट के. जैसे हम अगर अगर 2 बार ये ले ले, ए ले ले, और 2 बार बी ले ले, तो टोटल मिसिंग जो हो जाएगा 50 + 10 60, और 4 बार इसको ले सकते हैं. तो 2 2 और 4 के रेशियो में भी हम रख सकते थे. या फिर हम ऐसे करते कि इसको एक बार लेते तो 25 का मिसिंग होता, और इसको हम लेते 7 टाइम्स, तो भी हमारा यहाँ पे 35 का मिसिंग हो जाता. तो 35 + 25 कितना होता है? 60. तो इस केस में भी ये 4. या फिर हम इसको लेते एक बार और इसको लेते हम 4 बार, तो हमारा टोटल 45 का मिसिंग हो जाता. तो इसको 3 बार लेने से हमें 45 मिल जाता. तो 45 ग्रुप एवरेज के लिए ये भी सही है, ये रेशियो भी सही है, ये रेशियो भी सही है. तो जब 3 या 3 से ज्यादा का ग्रुप होता है, तो ग्रुप एवरेज से रेशियो निकालना इज नॉट पॉसिबल. मतलब इट इज पॉसिबल, बट ये कई सारे रेशियोज में ऐसा फॉलो करेगा. ठीक है, अभी समझ में आया? इज एवरीवन गेटिंग? ये लास्ट ही था, बताओ जल्दी. अब सेकंड क्लास रेशियो की करेंगे. गुड. जिसको नहीं समझ में आया वो रिकॉर्डेड वीडियो से बाद में देख लेना. ठीक है, तो सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ. थैंक यू एवरीवन. रेस्ट यू कैन मैसेज अस इन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना आप लोग अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट. ठीक है, चलो, ओके.